Hey guys, in this video we'll talk about the histology of the liver. It's a very interesting topic. Okay, in short, I'll explain you what it is, the basic concept of histology of the liver. Okay, so before we start with the liver, I'll just tell you the liver is covered by a capsule. That's called as a Gilson's capsule. Okay, this capsule it gives invagination inside the liver. This invagination then in turns it divides the liver into lobules again. So, talking about the histology of the liver, so I said they are lobules. Okay, we'll learn about the lobules first, and then I'll tell you about details about each and every content of the lobule. Okay, hepatic lobules. Trust me, it's a very useful way to learn in this way. Learn the lobules and then learn the cells that are present inside the lobules. Okay? Hepatic lobules. So basically, because of this Gilson's fascia into this parenchyma, it is dividing into the lobules. Okay, so lobules are of three types in hepatic cell. There are classical lobule, there is a portal lobule, and there is a hepatic acinus. Okay, three type of lobule. The most common what we use in this theory in academics is the classical lobule. Okay, so what I said, there are three type of lobules. That is the classical lobule, there is a portal lobule, and there is a what, hepatic acinus. Okay, now talking about the classical lobule. Okay, we'll go each and every lobules and I will tell you what is there and what details is required to learn in that particular lobule. Okay, let's go to the classical lobule now. So guys, in the classical lobule, what is there is, in the center you'll find a vein. Okay, in the center you're going to find a vein. That is called as a central vein. Center you find a vein called as central vein. Good. So this is central vein. Okay, then what is there, this classical lobule is in the shape of a hexagon. So if I just draw a hexagon dotted, imaginary hexagon, it won't be wrong. So this is an imaginary hexagon. Okay, so this hepatocytes, the cell of the hepatic organ, that is the liver, is called as hepatocytes. Okay, how are they arranged is that, now imagine this to be a hepatocyte and schematic diagram. Okay, so this hepatocyte, this cell of the hepatocyte, they are arranged in a stacking layer. Okay, these are like one up the other. So this is the layer of the hepatocyte. Now this layer of the hepatocyte is also called something. This is called hepatic plate. Okay, hepatic plate. Nice, acha hai. Now this hepatic plates, they are arranged in a radiating manner. Somewhere this way. I'm just drawing it a few of them, but there are lots of them over here. Okay, which are in the radiating from the central vein. Okay, they are radiating outwards this way. Okay, so there's some more over here as well. Okay, there are many over here. Okay, there are many of them over here. Just showing few of them to show you. Okay, fine. Now we're saying that hexagon कॉन्फर्म करता है हेक्सागन चीज़ें. यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, कैप्सूल होती है लीवर के बाहर, इन्वेजिनेट करती है. ये जो देख रहे हो ना तुम, दिस थिंग इज़ द गिब्सन्स कैप्सूल का ही पार्ट है. ठीक है, ये जो इसको डिवाइड करता है इनटू द लोब्यूल्स. अच्छा, अभी ये जो गंदा दिख रहा है ना, नाउ दिस वर्टेक्स और जो ये बन रही है ना, यहाँ पर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पोर्टल ट्रायड. देखो ट्रायड है, तीन चीज़ें हैं. कौन सी चीज़ें होंगी, बोलो आई नो यू नो इट. पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी और बाइल डक्ट. बट एक्चुअली ऐसा नहीं बोलना है. क्या बोलना है?
आई टेल यू, तुम्हें बोलना है there is a branch of a portal vein, there is a branch of a hepatic artery, there is a interlobular bile duct, and these three things forms something called as a portal triad. Right? So this portal triad is present all over here. Here also, here also, here, yeah, here, is it? Yep, here, yes. All these vertices. Okay. Now how are this arranged? And tell you this is a one lobule. So how many lobules are there in a liver? There are many of them. I don't need to learn the number. But how are they arranged, man? I just draw a schematic diagram to show you that how many, like how are they arranged, okay? Easy diagram है यार, like a design है basically. ठीक है, so this way. Just not, okay. Fine, down this way. Good. Now you have to tell me what is present in the center. Which vein? Portal vein? No, central vein. Correct. Central vein is in the center. Okay. Now, what is present in this periphery, this vertex? There is a triad containing a branch of the portal vein, branch of the hepatic artery, and the interlobular bile duct. Good. हर जगह present होगा, ठीक है? Okay. समझ में आ रही है तुम्हें? Okay. This is the structure and schematic diagram of a liver. अभी मैंने बताया तुम्हें there are lobules. Classical lobule होता है, portal lobule होता है और hepatic acids होता है. What I've drawn over here is now, इसी को तो हमने classical lobule कहते हैं. This is the figure of classical lobule. ठीक है? Now what more you need to learn over here is that, as I told you, ये सब होते हैं, ठीक है, सब cells वगैरह होते हैं. I will draw a one and show you भाई कैसे होते हैं cells. That's it. Okay, ऐसे सारी अरेंजमेंट में रहती है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो गया खत्म क्लासिकल लेवल. लेट अस गो लिटिल डीपर इनटू इट, लर्न कि भैया इसमें और क्या क्या पढ़ना है. ठीक, देखो क्या होता है. यहाँ पर रुका पोर्टल वेन. ओके, हियर इज द पोर्टल वेन. ओके, हियर इज द पोर्टल वेन. नाउ blood has to go from portal vein to the central vein. How will I do? You see, I made the route between this cells. Okay, मैंने इनको क्या बोला था, हेपेटिक प्लेट्स. हेपेटिक प्लेट्स सिंगल लेयर के होते हैं, बराबर है, बहुत बराबर है. तो जो ये हेपेटिक प्लेट्स के बीच में जो गैप बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं पता है तुम्हें? साइनोसॉइड्स. साइनोसॉइड्स. ओके, साइनोसॉइड्स. ग्रेट. ओके, नाउ अभी साइनसॉइड को लोग डिटेल नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है. चलो, आई एम ड्राइंग क्लियर बनाता हूँ मैं इसमें. तो ये क्रॉस सेक्शन मैंने सेक्शन लिया, ठीक है. यहाँ पर मैंने एक सेक्शन लिया इसका, ठीक है, एंड मेड ओवर हियर. ये सब क्या है जो मैंने बनाया? सेल प्लेट्स, हेपेटिक प्लेट्स, कुछ भी बोल सकते, ठीक है. ओके, इस गैप क्या कहते हैं? साइनसॉइड कहते हैं. अच्छा, अभी you should know one thing that, okay, wait, there is a central vein over here, there's a portal vein over here, the blood flows from here to here. Okay, now जो what you want to learn more here is there is a cell called as cup vessels. These are the, ऐसे बना रहे हैं फिर cup vessels. एक सेल होती है यहाँ पर, इसका नाम क्या आता है? cup vessels.
ओके, क्या नाम है, कफर सेल्स, बहुत बहुत बढ़िया है. एंड नाउ देयर इज अनदर टाइप ऑफ द सेल्स ओवर हियर दैट इज कॉल्ड एज द एपिथेलियल सेल्स. ठीक है, मैं क्यों बना रहा हूँ, देखिए रीजन ओवर हियर. भाई ये जो गैप दिख रहा था मैं यहाँ पर बिटवीन द एपिथेलियल सेल्स एंड द कप, मैं लेबल कर लेता हूँ अभी. This gap between these epithelial cells and the corpus cells called as the space of, do you know it? DC. DSC. Okay, space of DC. Now, one more thing. You see here, this is the, I told you this is the Gleason's capsule. Okay, Gleason's capsule. The space between this Gleason capsule and the cell plate, this is cell plate, okay? Cell plate, this is the Gleason's capsule. The space which is formed over here, this is called as the space of, come on, mall. ज़्यादा है mall, okay? Okay, एक और चीज़. So imagine, ये तो मैंने 2 सेल प्लेट बनाए ना, और भी बहुत सारे सेल प्लेट्स हो गए. Imagine I draw one more cell plate over here. ये एक और डायग्राम बनाता हूँ मैं यार. ओके, सो व्हाट हैपेंस हियर इज, जो बाइल होती है ना, बाइल ये ऐसे फ्लो करती है एंड दिस फॉर्म्स बाइल डक्ट, इंटरलोबुलर बाइल डक्ट. ये क्या बनना चाहिए, इंटरलोबुलर बाइल डक्ट. अच्छा, मैं जब ग्रीन में जो सेल बना रहा हूँ ना यहाँ पर, इस सेल्स का एक पर्टिकुलर नेम है. ठीक है, ये जो मैंने जो ब्लैक में सेल्स बनाए दी तो हेपेटोसाइट्स है, बट ये जो मैंने ग्रीन में बनाया ना ये वाले, दिस इज कॉल्ड एज अ कोलैंजियोसाइट्स. ठीक है, कोलैंजियोसाइट्स. मैंने ये जो बनाया दिस इज द बाइल डक्ट. Do you see the flow of the blood is this way and the flow of the bile is this way, तो opposite रहता है. ठीक है, make sense also ना. Okay, ये हो गया एक टाइप ऑफ लोब्यूल, that is the classical lobule. नेक्स्ट टाइप ऑफ लोब्यूल बात करेंगे, that is the portal lobule. यहाँ पर ही करते हैं. ठीक है, बहुत ईजी है. पोर्टल लोब्यूल, ओके, मतलब कि इसका जो सेंटर होगी, अभी क्लासिकल का सेंटर कौन था, सेंट्रल वेन. अभी जो पोर्टल वेन, पोर्टल लोब्यूल बनेगा, इसका सेंटर कौन होगा, पोर्टल वेन. बहुत बढ़िया. कुछ यहाँ पर होगा पोर्टल वेन. आई जस्ट ड्रॉ वन ब्लू कलर का सर्कल, यू अंडरस्टैंड, ये एक पोर्टल वेन है. ठीक है, ओके. व्हाट आई डू नाउ इज, सी सब बना रहा हूँ मैं लोब्यूल. ये भी हेक्सागोन का ही होता है, बट द थिंग इज यहाँ पर का कॉन्सेप्ट अलग होता है, क्योंकि सेंटर में कौन है, पोर्टल वेन. पेरिफेरी में कौन है, पेरिफेरीज में कौन है यार, यहाँ पर एक कौन है, देखो, देर आर सेंट्रल वेन हियर, देर आर सेंट्रल वेन हियर ऑल्सो, बट हियर देयर इज व्हाट, पोर्टल वेन. ठीक है, ऐसा रहता है ये कॉन्सेप्ट. तुम कहीं पे बनाओ, ऐसे ही बनेगा ना तुम्हारा, तो कहीं पर बनाओ भाई, यू विल गेट एटलीस्ट 1 पोर्टल वेन एंड 3 कहाँ पर, यहाँ पर दिख रहा है ना भाई, ये देखो यहाँ पर, ये देखो ना भाई, दिस इज ऑल्सो, देर आर 3 सेंट्रल वेन एंड 3 पोर्टल वेन. याद रखना, ठीक है, इसकी वर्टेक्स में आती है ना. इसको हम लोग कहते हैं, ये जो मैंने बनाया ना यहाँ पर, ड्रॉ यू, ओके, ये जो मैंने बनाया है, दिस इज कॉल्ड एज अ, कौन सा लोब्यूल है भाई ये, पोर्टल लोब्यूल. ओके, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द न्यूट्रिशनल लोब्यूल. क्या हैंड राइटिंग आ रहा है यार, न्यूट्रिशनल लोब्यूल. ठीक है, क्यों, बिकॉज कि देखो ना, पोर्टल वेन ही तो है जो न्यूट्रिशन दे रही है
सारी हेपेटिक लोब्यूल को, देखो ना यहाँ से तो आ रही है नरिशमेंट, मैंने क्या बनाया था देखो, यहाँ से तो आ रही है नरिशमेंट, करेक्ट, यस। सो हाँ, एक और लास्ट लोब्यूल है, बहुत ईजी है, दिस इज दैट, कैसे बना जगह ही बचनी बचा यार, यहाँ बना लेता हूँ, इस जो मैंने बनाया यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एज अ हेपेटिक असाइनस, ठीक है, इसको मैं अच्छे से यहाँ बनाता हूँ। सो पेरिफेरी में कौन है भाई, सेंट्रल वेन, ओके, यहाँ पर क्या है भाई, पोर्टल वेन, समझ में आई ना, देखो यहाँ पर आराम से देखो, पोर्टल वेन्स यहाँ पर देखो, पोर्टल कैसे बनवा यार, ये देखो, ये देखो पोर्टल वेन्स यहाँ पर है, सेंट्रल वेन यहाँ पर है, ठीक है। सो जस्ट ड्रॉ इट टू यू, this is way, this is the figure of what, this is the figure of what, figure of hepatic acids, very good। now how it is arranged, मतलब क्या दिखने मिलता है इसके अंदर, 3 जोन दिखने मिलते हैं इधर, बस इतना ही है, बस 2 मिनट और, बस 2 मिनट और, जोन 1, जोन 2, जोन 3, सिमिलरली हियर जोन 1, जोन 2, जोन 3, ग्रेट। अभी ये सब क्या है, दिस इज द, भी काम करता हूँ, जस्ट मेक इट ओके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ओके ठीक है, तो ये पोर्टल वेन है, ये सेंट्रल वेन है, ये भी क्या है, पोर्टल वेन, सेंट्रल वेन, ओके। अभी जब ब्लड ऐसे आती होगी ना भाई, इमेजिन ब्लड से आ रही है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन किसको मिल रहा है, जोन 1 को, ज़्यादा ब्लड, मतलब ब्लड जो आ रही है, फर्स्ट जोन इन कॉन्टैक्ट कौन है, जोन 1, तो ज़्यादा ब्लड, ज़्यादा ऑक्सीजन भी उसको मिलेगा भाई मेरे, मोर ऑक्सीजन मोर एंटीजेंस भी मिले लो भाई, मतलब इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है इसमें, क्योंकि मोर ऑक्सीजन हो रही है तो इंक्रीज इन मतलब क्या बोलते हैं, जब कोई डैमेजेस होगा तो वापिस से सही हो सकता है, ठीक है, ठीक समझ रहे हो भाई तुम, कि जल्दी से रीजनरेट कर सकते हैं अपनों को, रीजनरेसी इज इंक्रीज, इज हाई ओवर हियर, सारे उल्टा होता है यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना, लॉजिकल है यार, क्योंकि यहाँ से आते आते ब्लड यहाँ से, मान लो ब्लड यहाँ से ऐसे आ रही है, ठीक है, जोन 1 में क्या रहेगा, जोन 3 में क्या रहेगा, सबसे कम ऑक्सीजन, सबसे कम एंटीजेंस, तो सब उल्टा रह जाएगा इसका, दैट इज इफ इज राइट हियर अगेन, दैट जोन 1 जोन 2 में, जोन 3 में क्या फ़र्क है, जोन 1 जोन 3 जोन 2 को समझ यार, तो जोन 1 में क्या है, ऑक्सीजन कितना है, सबसे हाईएस्ट, सबसे लोएस्ट, मीडियम, नरिशमेंट हाईएस्ट, लोएस्ट, मिनिमम, मीडियम, और एंटीजेंस हाईएस्ट, लोएस्ट, मिनिमम, रीजनरेसी पावर हाईएस्ट, लोएस्ट, मीडियम, समझ में आया। तो गाइस दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, ठीक है, सभी कुछ सारी कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें अच्छे से बताया, दिस नथिंग दैट यू डोंट नो अबाउट इट नाउ, ओके, दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच।